So, what are we going to read? Just one second. I have my pencils. Okay. So, indicators of health पढ़ने जा रहे हैं ना? राइट. सो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में हमें क्या देखना है, चलो आगे देखते हैं. So, a question that is often raised is how health is a given commodity. Indicators are required not only to measure the health status of a community but also to compare the health status of a country with that of another, for assessment of healthcare needs, for allocation of scarce resources, and for monitoring and evaluation of health services, activities, and programs. Indicators help to measure the extent to which the objective and target of a program are being attained. ठीक है. तो इंडिकेटर्स का क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम हम लोगों को जज करता है दैट हाउ मच दैट वी हैव रेड, उसी तरीके से इंडिकेटर्स है वो बताता है कि हाउ मच द डेवलपमेंट इज़ टेकिंग प्लेस, कि वेदर द डेवलपमेंट इज़ टेकिंग प्लेस और नॉट. ठीक. Yeah. So let's move ahead. So, as the name suggests, indicators are only an indication of the given situation or a reflection of that situation. In WHO's guideline for health and health program evaluation, they are defined as variables which help to measure changes. Often they are used particularly when these changes cannot be measured directly, as for example, health or nutritional status. It measured sequentially over time. They can indicate direction and speed of change and serve to compare different areas or group of people at the same moment in time. So there has been some confusion over technology health indicator as compared to health index. प्लूरल क्या होता है, इंडाइसिस और इंडाइसिस. ठीक है. So it has been suggested that in relation to health trends, the term indicator is to be preferred to index. So indicator को हम लोग प्रेफर करेंगे, इंडेक्स को नहीं करेंगे. whereas health index is generally considered to be an amalgamation of health indices. So characteristic of indicators क्या होता है? Indicators have been given scientific respectability, और for example ideal indicator, जो ideal indicator है should be valid, that is they should actually measure what they are supposed to measure. फिर they should be reliable. हाय शशांक. तो जो इंडिकेटर्स है ना, हेल्थ इंडिके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हमें हेल्थ इंडिकेटर्स का क्यों ज़रूरत है. तो जिस तरीके से हमारा एग्ज़ाम मान लो हमें इंडिकेट करता है दैट हाउ मच दैट वी हैव रेड, उसी तरीके से ये जो इंडिकेटर्स है ना बताते हैं कि कितना कैसा हेल्थ का क्या मतलब स्टेटस है. तो ये जो इंडिकेटर है ना, आइडियल इंडिकेटर कैसा होता है, वैलिड होना चाहिए, मतलब एक्चुअल में मेज़र करना चाहिए जो वो सपोज टू मेज़र कर रहा है. देन रिलायबल होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ द आंसर शुड बी द सेम इफ़ मेजर्ड बाय डिफरेंट पीपल इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस. देन सेंसिटिव होना चाहिए, यानी दे शुड बी सेंसिटिव टू चेंजेस इन द सिचुएशन एंड कंसर्न. स्पेसिफिक होना चाहिए, दे शुड रिफ्लेक्ट चेंजेस ओनली इन सिचुएशन कंसर्न. नाउ should be feasible, yani they should have the ability to obtain data needed, or they should be relevant भी होना चाहिए. ठीक है. दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट. तो ये सारा क्वालिटीज़ जो है, 6 क्वालिटीज़, ये एक आइडियल इंडिकेटर में होना चाहिए. सो बट द रियल
But in real life, there are few indicators that comply with all the criteria. Measurement of health is by far from simple. No existing definition, including the WHO, contain criteria for the measurement of health. This is because health, like happiness, cannot be defined in exact measurable terms. Its presence or absence is so largely a matter of subjective judgment. Hi Pratap. सो काफ़ी जजमेंटल हो जाता है कि वेदर अ पर्सन इज़ इन गुड हेल्थ और नॉट, वो बताना काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है सिंस वी हैव प्रॉब्लम। जी हाँ, मैं MBBS कर रही हूँ। सो सिंस वी हैव प्रॉब्लम्स इन डिफाइनिंग हेल्थ, we also have problem in defining health, and the question is largely measuring health, and the question is largely unresolved. Therefore, measurement of health have been framed in terms of illness. So health जो है ना, हम किस terms में देखते हैं? Illness के terms से, यानी कि lack of health के terms में, and the consequence of ill health जैसे कि morbidity, disability, economic या occupational domestic factors that promote ill health, all the antithesis of health देखते हैं. Now, further, health is multidimensional and each dimension is influenced. I'm from private college. So further, health is multidimensional. Health जो होता है हमारा बहुत सारा multidimensional होता है, यानी उसके बहुत सारे dimension होते हैं. और प्रताप आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. So, and each dimension is influenced by numerous factors, some known and many unknown. This means we must measure health multidimensionally. Thus, the subject of health measurement is a complicated one even for professionals. Our understanding of health, therefore, cannot be in terms of a single indicator, it must be conceived in terms of profile employing many indicators which may be classified as. Now क्या क्या indicators होना चाहिए? Mortality indicator, morbidity indicator. बोला तो प्राइवेट में हूँ, गवर्नमेंट सीट थी मेरी. Mortality indicator, morbidity indicator, disability rate, national status indicator. Now, healthcare delivery indicator, utilization rate, indicators of social and mental health, environmental indicators, socio-economic indicator, health policy indicator, indicators of quality of life and other indicators. ये 12 indicators है जो कि हेल्थ को बताता है, राइट. सो विल रीड ऑल दिस 12 इंडिकेटर्स वन बाय वन. अभी हम लोग मोर्टैलिटी इंडिकेटर्स से शुरू करते हैं, ठीक है. या वेरी राइट शंक. वी आर रीडिंग अबाउट द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, ठीक है. तो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ 12 तरीके के होते हैं. वी कैन सी इट हियर, दीज आर द 12 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ. और ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. द क्वेश्चन वुड ask कि write about the indicators of health, then you have to write about all these indicators as well as you have to explain about them also, ठीक है. then लिख लेना. just give me 1 minute. Yeah. So let's resume. Resume about the mortality indicator. First one is mortality indicator. So crude death rate. Mortality indicators में क्या क्या आता है पहले हम लोग देख लेते हैं. Crude death rate, then expectancy of life, then age specific death rate, infant mortality rate, child death rate, under 5 proportionate mortality rate, adult mortality rate. Okay. Then maternal,
या फिर प्यूपेरल मोर्टालिटी रेट, देन डिजीज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट, केस फेटेलिटी रेट, years of potential lost life lost, ये सारे आते हैं हमारे मोर्टालिटी इंडिकेटर में. ओके. थैंक यू प्रताप. सो लेट्स रीड मोर्टालिटी इंडिकेटर. सबसे पहला क्या है? सबसे पहला इज क्रूड डेथ रेट. So this is considered a fair indicator of comparative health of people. It is defined as the number of death per 1000 population per year in a given community. Hi मम्मी. सो हम लोग मोर्टालिटी इंडिकेटर पढ़ रहे. क्रूड डेथ रेट है, तो क्रूड डेथ रेट इज़ कि कितनी डेथ हुई है एक हज़ार पॉपुलेशन में, 1000 लोगों के बीच में कितनी सारी डेथ हुई हर एक साल में एक गिवन कम्युनिटी में. ठीक है, ये बताता है कि कैसा हेल्थ है उस जगह का. सो इट इंडिकेट्स द रेट एट विच पीपल आर डाइंग. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, हेल्थ शुड बी नॉट बी मेजर्ड by number of deaths that occur in a community. ऐसे हेल्थ को वैसे तो मेज़र नहीं करना चाहिए, बट इन मेनी कंट्रीज द क्रूड डेथ रेट इज़ द ओनली अवेलेबल इंडिकेटर ऑफ हेल्थ. When used for international comparison, the usefulness of the crude death rate is restricted because it is influenced by age, sex composition of the population. Although not a perfect measure of health status, a decrease in death rate provides a good tool for assessing the overall health improvement of a population. Reducing the number of deaths in a population is an obvious goal of medical and health care, and success or failure to do so is a measure of nation's commitment to better health. Now expectation of life देख लेते हैं. Expectation of life क्या होता है? So life expectation at birth is the average number of years that will be lived by those born alive into a population if the current age specific mortality rate persists. मतलब अभी के दर के हिसाब से ये जो इंसान जो अभी पैदा हुआ है वो कितने साल जिएगा. That's expectancy of life. So life expectancy at birth is highly influenced by infant mortality rate, where that is high. So life expectancy at the age of 1 excludes the influence of infant mortality, and life expectancy at the age of 5 excludes the influence of child mortality. So life expectancy at birth is used most frequently. It is estimated for both sexes separately. An increase in the expectation of life is regarded interferentially as an improvement in health status. So life expectancy is a good indicator of socio-economic development in general. As an indicator for long-term survival, it can be considered a positive health indicator. It has been adopted by Global Health Indicator. ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? एज स्पेसिफिक डेथ रेट. एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होता है? डेथ रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर स्पेसिफिक एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन which are defined by age. Age specific death rate is defined as total number of death occurring in a specific age group of population. जैसे 20 to 24 years में कितना सारा डेथ हो रहा है in a defined area during a specific period per 1000 estimated total population of the same age group of population in the same area during the same period. इसका मतलब होता है स्पेसिफिक एज ग्रुप किसी पॉपुलेशन का, कोई एक एज ग्रुप उठा लो जैसे 20 to 24 ईयर.
ना उनमें कितना डेथ हो रहा है एक पूरे पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, एक डिफाइंड एरिया में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड 1,000 एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, तो दैट इज़ नोन एज एज स्पेसिफिक डेथ रेट। नाउ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज़ द रेशियो ऑफ डेथ अंडर 1 year ऑफ एज इन अ गिवन ईयर to the total number of live birth in the same year usually, यानी कि अंडर 1 year ऑफ एज में कितना डेथ हो रहा है टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, कितना डेथ हो रहा है और कितना लाइव बर्थ हो रहा है पर 1,000 बर्थ के हिसाब से इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। It is one of the most universally accepted indicator for health status, not only in infants but also the whole population and of the socio-economic conditions under which they live. So, in addition, the infant mortality rate is a sensitive indicator of the availability, utilization, and effectiveness of healthcare, particularly perinatal care. बढ़िया है। नाउ ये इन्फेंट मोर्टालिटी ये भी बताता है पेरीनेटल केयर क्या है, ऐसा है यूटिलाइजेशन इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर कैसा है। ना चाइल्ड डेथ रेट ये क्या होता है? अनदर इंडिकेटर रिलेटेड टू द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस इज़ द अर्ली चाइल्डहुड 1 से 4 years जो होता है मोर्टालिटी रेट। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ एट ages 1 to 4 year in a given year per 1,000 children in that age group at the midpoint of the year concerned. So it thus excludes infant mortality. ये 1 year से लेके 4 year वाले बच्चे को चाइल्ड डेथ रेट जो है वो इन्फेंट में नहीं लेता है, इन्फेंट 1 year तक का लेता है, 1 से 4 चाइल्ड में आ जाता है। Now, apart from its correlation with inadequate MCH care, it is also related to insufficient nutrient, low coverage by immunization, adverse environmental exposure, and other exogenous agents. Whereas the IMR, infant mortality rate जो होता है अंडर 1 वाला होता है, may be more than 10 times higher in the least developed countries than in the developed countries. The child mortality rate may be as much as 25 times higher. This indicates the magnitude of the gap and the room for improvement. So, आगे देखते हैं। अंडर 5 proportionality mortality क्या होता है? mortality rate. So it is the proportion of total death occurring in the under 5 age group. This rate can be used to reflect both infant plus child mortality rate is under 5 proportionality. अंडर 5 में सब आ जाएंगे, 1 साल के बच्चे भी आ जाएंगे, 5 साल के 4 साल के भी आ जाएंगे। Now, in communities with poor hygiene, the proportion may exceed 60 per 1,000 live birth. In some European countries, the proportion is less than 2 per 1,000 live birth. High rate reflect high birth rate, high child mortality rate, shorter life expectancy. So adult mortality rate क्या होता है? The adult mortality rate is defined as the probability of dying between the age of 15 to 60 years, यानी जो कमाऊ वाला population होता है उसको बोला जा रहा है per 1,000 population. The adult mortality rate offers a way to analyze health gap between countries in the main working groups. The probability of dying in adulthood is greater for men than for women in almost all countries, but the variation between countries is very large. In Japan, less than 1 in 10 men and 1 in 20 men die in these productive age group.
compared to almost 2 to 3 in 10 men and 1 to 2 women in Angola. Now maternal या फिर परप्यूरल मोर्टालिटी रेट क्या होता है? तो maternal या फिर puerperal mortality accounts for the greatest proportion of death among women of reproductive age in most of the developing world. There are enormous variation in maternal mortality rate according to countries' level of socioeconomic status. Now, disease specific mortality rate क्या होता है? So, mortality rate can be computed for specific disease. As countries began to extricate themselves from the burden of communicable disease, a number of indicators such as death from cancer, cardiovascular disease, accidents, hi mummy, diabetes have emerged as measures of specific disease problem. The proportional mortality क्या होता है? The simplest measure of estimating the burden of a disease in the community is proportional mortality rate, that is proportion of all the death currently attributed to it. For example, coronary heart disease जो है is the cause of 25 to 30% of all the death in most western countries. So the proportional mortality rate from communicable disease have been suggested as a useful health status indicator. It indicates the magnitude of preventable mortality. Now case fatality rate क्या होता है? So case fatality rate measures the risk of person dying from certain disease within a given time period. Case fatality rate is calculated as number of death from a specific disease during a specific time period divided by number of cases of the disease during the same time period, usually expressed as per 100. The case fatality rate is used to link mortality to morbidity. One function of the case fatality rate is to measure various aspects or properties of a disease such as pathogenicity, severity or virulence. It can also be used in poisonings, chemical exposure या other short term non disease cause of death. Now years of potential life lost क्या होता है? So year of potential life lost is based on the year of life lost through premature death. So it is defined as one that occurs before the age to which a dying person could have expected to survive, like before an arbitrary determined age, usually taken age of 75 years. So a 30-year-old who dies in RTA could theoretically have lived an average expectancy of 75 years of age. Thus 45 years of life are lost. ठीक है, तो उसको लाइफ लॉस्ट कहेंगे हम लोग. Now, mortality indicator represents the traditional measure of health status. Even today, they are probably the most often used indicator of health. As infectious disease have been brought under control, mortality rate have declined to very low level in many countries. Consequently, mortality indicators are losing their sensitivity as health indicator in developed countries. However, mortality indicators continue to be used as a starting point in health status evaluation. Now ये तो हमारा था
मॉर्टैलिटी, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मतलब हो गया कि वो इंसान की डेथ नहीं हुई, बट हिज हेल्थ इज़ नॉट टू द पॉइंट, सो इज़ नॉट एबल टू डू ऑल द फंक्शंस, है ना। सो मॉर्बिडिटी में क्या है, to describe health in terms of mortality rate only is misleading. This is because mortality indicators do not reveal the burden of ill health in a community, as for example mental health या rheumatoid arthritis. Therefore, morbidity indicators are used to supplement mortality data to describe the health status of a population. So, morbidity statistics have also their own drawback. They tend to outlook a large number of conditions which are subclinical or inapparent. That is the hidden part of the iceberg of disease. The following morbidity rate are used for assessing the ill health of a community. Incidence या फिर prevalence, ठीक है। नोटिफिकेशन रेट, अटेंडेंस रेट एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या हेल्थ सेंटर, एडमिशन, री एडमिशन, डिस्चार्ज रेट, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, स्पेल ऑफ सिकनेस और एब्सेंटी फ्रॉम वर्क और स्कूल। ये सब क्या बताता है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर है ना। डिसेबिलिटी रेट देख लेते हैं। सो दो तरीके का होता है, इवेंट टाइप इंडिकेटर एंड पर्सन टाइप इंडिकेटर, ठीक है। तो देखते हैं डिसेबिलिटी रेट क्या हो जाता है। फिर since death rate have not changed markedly in recent years despite massive health expenditure, disability rate related to illness and injury have come into use to supplement mortality and morbidity indicators. The disability rate are based on the premise or notion that health implies a full range of daily activities. The commonly used disability rate falls into two groups, event type indicator and person type indicator. Event type क्या होता है, नंबर ऑफ डेज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। ये बेसिकली देखो, मोर्टैलिटी तो बताता है कितने का डेथ हो गया, ठीक है। वो बताएगा हेल्थ सिस्टम बेसिकली कि इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं, बट वही नहीं ना बताएगा। मॉर्बिडिटी बता दिया कि आपका कितना इंसिडेंस प्रिविलेंस है, कितने लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, कितने लोगों को रीएडमिशन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ड्यूरेशन कितने समय तक रह रहे हैं, एब्सेंट फ्रॉम वर्क कितने समय तक हो रहे हैं। ये सब मॉर्बिडिटी इंडिकेटर बताएगा। डिसेबिलिटी रेट बताएगा कि किसी डिजीज़ की वजह से कितना डेज रेस्ट्रिक्ट हो गया, जिस वजह से वो अर्न नहीं कर पाया, या बेड डिसेबिलिटी डे हो गया, या वर्क लॉस डे और स्कूल लॉस डे विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ना। पर्सन टाइप इंडिकेटर क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल कन्फाइंड टू बेड, कन्फाइंड टू हाउस, स्पेशल एड इज़ गिवन अराउंड ईदर इनसाइड और आउटसाइड द हाउस ना। फिर लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी आ जाता है, फॉर एग्जांपल लिमिटेशन टू परफॉर्म द बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जैसे कि ईटिंग, वॉशिंग, ड्रेसिंग, गोइंग टू टॉयलेट, ये सब भी अगर नहीं कर पा रहे तो मूविंग अबाउट। लिमिटेशन इन मेजर एक्टिविटीज़ जैसे एबिलिटी टू वर्क एट अ जॉब, एबिलिटी टू हाउस होल्ड, ये सब नहीं कर पा रहे तो क्या वशांक, अच्छा से वीडियो का क्वालिटी नहीं है क्या? क्वालिटी तो ठीक है। नाउ इसका ना वी हैव सर्टेन इंडिकेटर्स फॉर दिस। सो फर्स्ट वन इज़ हेल। सो हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हेल कहते हैं, ठीक है। तो हेल क्या होता है, सो द नेम ऑफ द इंडिकेटर यूज टू मेजर हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पहले डेल था इसका नाम, अब उसका नाम हेल कर दिया।
डिसेबिलिटी से हटा करके हेल्थ एडजस्टेड कर दिया, to health adjusted life expectancy. Now, HALE is based on life expectancy at birth but includes the adjustment of time for time spent in poor health. It is most easily understood as equivalent number of years in full health that a newborn can expect to live based on the current rate of ill health and mortality. हेल हो गया। अब हमें कॉली, कॉली और डेली बहुत ज़्यादा आता है। हेलो ललित कुमार। सो कॉली जो है ना, ये आगे पढ़ने में भी विल गेट लॉट नंबर ऑफ टाइम्स कॉली एंड डेली। सो कॉली क्या होता है? क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मतलब कितना लाइफ जो हमारा था उसमें से हम लोगों ने कितना बीमारी की वजह से अपनी लाइफ को एडजस्ट किया, वही होता है। So, QALY is a measure of disease burden, including both the quality and quantity of life lived. It is used in assessing the value for money of a medical intervention. जितना हम लोग मनी लगाएं मेडिकल इंटरवेंशन में, उसको असेस करता है। सो क्वाली is based on the number of years of life that would be added by intervention. नंबर ऑफ लाइफ जो कि ऐड होगा बाय इंटरवेंशन, ओके, उसको कॉली कहते हैं। ईयर इज परफेक्ट ईच ईयर इन परफेक्ट हेल्थ इज असेस्ड अ वैल्यू ऑफ 1 डाउन टू अ वैल्यू ऑफ 0 फॉर डेथ। दैट इज़ वन क्वाली क्या होता है? 1 ईयर ऑफ लाइफ इंटू 1 यूटिलिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 क्वाली is a year of life lived in perfect health. Half a year lived in perfect health is equivalent to 0.5 क्वाली, यानी 1 ईयर पूरा 1 साल जिए इंटू 0.5 जो है वो हेल्थी जिए यूटिलिटी वैल्यू, तो उसको 0.5 क्वाली कहेंगे। बेसिकली आप 1 साल में आप कितना ज़्यादा कितने टाइम आप हेल्दी रह रहे हो, दैट्स नोन एज क्वाली। सो डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? सिनोनिमस है एक्टिव लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो DFLE बोलते हैं is average number of years an individual is expected to live free of disability if current pattern of mortality and disability continues to apply. ना डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स डैली क्या होता है? सो डैली इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिजीज बर्डन expressed as the number of years lost due to ill health. नंबर ऑफ ईयर्स जो कि हमारा लॉस्ट हो गया ड्यू टू इल हेल्थ, उसको हम लोग कहते हैं डेली। डिसेबिलिटी की वजह से, इल हेल्थ की वजह से, या फिर अर्ली डेथ की वजह से नंबर ऑफ ईयर्स जो लॉस्ट हो गया। ओरिजिनली डेवलप्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द वर्ल्ड बैंक इन 1990, द WHO subsequently adopted the method in the year 2000. So the DALY is becoming increasingly common in the field of public health and health impact assessment. So the global burden of disease and project combines the impact of premature mortality with that of disability. It captures the population impact of important fatal and non-fatal disabling condition. एक सेकेंड, हाँ आई। ओके, सो ये क्या होता है कि द डेली इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है,
तो ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज प्रोजेक्ट जो है कंबाइंस द इम्पैक्ट ऑफ प्री मेच्योर मोर्टैलिटी विथ दैट ऑफ डिसेबिलिटी। हेलो मम्मी। सो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो है ना, वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है किस चीज़ को, इम्पैक्ट ऑफ प्री मेच्योर मोर्टैलिटी with that of disability. It captures the population impact of important fetal and non-fatal disabling conditions through a single measure. The major measure used is disability adjusted life years daily, which combines years of lost life, and years lost to disability, दो चीज़ें। ठीक है, ये दो चीज़ें, ईयर्स ऑफ लॉस्ट लाइफ है और ईयर्स लॉस्ट टू डिसेबिलिटी। ईयर्स ऑफ लॉस्ट लाइफ क्या होता है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ डेथ एट ईच एज multiplied by the expected remaining year of life according to global standard life expectancy. Now years lost to disability क्या होता है, where the number of incident cases due to injury या फिर illness is multiplied by the average duration of the disease and a weighing factor reflecting the severity of the disease on a scale from 0 perfect health to 1 यानी डेड। सो कैलकुलेट कैसे करते हैं डेली को, डेली इज इक्वल्स टू वाई एल एल प्लस वाई एल डी, यानी ईयर्स ऑफ लॉस्ट लाइफ प्लस ईयर्स लॉस्ट टू डिसेबिलिटी, ये दोनों को करते। लॉस्ट लाइफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेथ ईच एज ग्रुप में जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपेक्टेड रिमेनिंग ईयर ऑफ लाइफ, और ईयर्स लॉस्ट टू डिसेबिलिटी क्या होता है, इंसिडेंट इंजरी हुआ, इलनेस हुआ, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़ से। ठीक है, तो जो डेली है, ये जो बेसिकली डेली है, ये बता क्या रहा है, बता ये रहा है कि हाउ मच इज़ द ईयर्स या लॉस्ट, कितना इनकम ये जो पर्सन कमाने वाला था वो उसका चला गया, यही बता रहा है ये। सो द डेली रिलाइज ऑन एन acceptance that the most appropriate measure of the effects of the chronic illness is time on daily, therefore is equal to 1 year of healthy life lost. So Japanese life expectancy statistics are used as standard for measuring premature death, as Japanese have longest life expectancy. So daily जो होता है can reveal surprising thing about a population's health. For example, the 1990 WHO report indicates that 5 out of 10 leading cause of disability were psychiatric condition. Psychiatric and neurologic conditions account for about 28% of year lived with disability. But accounts for only 1.4% of all death and 1.1% of years lost, years of life lost. So thus they have a huge impact on population. A crucial distinction among daily student is that using a social weighing in which the value of each year of life depends upon the age. Now, commonly, years lived as a young adult are valued more highly than years spent as a young child or old adult. So, this weighing system reflects society's interest in productivity and receiving a return on its investment and in upbringing of the children. So, the effect of the interplay between life expectancy and years lost, discounting and social weighing are complex depending upon the severity and duration of illness.
न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, फोर्थ वन इज न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। ये क्या बताता है? ये न्यूट्रिशनल स्टेटस इज अ पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर। Three nutritional status indicators are considered important as indicators of health status. These are anthropometric measurement. So, anthropometric measurement of preschool children, example weight, height, mid-arm circumference. Now, height, जैसे कि height and sometimes weight of children at school entry. Prevalence of low birth weight, less than 2.5 kg. ये तीन हैं जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर है। क्या? बर्थ वेट, दूसरा हाइट क्या है, और तीसरा एंथ्रोपोमेट्री, हाइट एंड वेट एंड मिड आर्म सर्कमफरेंस। नाउ हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, ये क्या होते हैं? So the frequently used indicators of health delivery are doctor population का ratio, doctor nurse ratio, population bed ratio, population per health sub center, now population per trained birth attendant. These indicators reflect the equality of distribution of health resources in different parts of the country and of the provision of health care. Hi Shang. The utilization rate, ठीक है। अभी हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स हो गए, ये सब हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं। फिर 5 इंडिकेटर्स पढ़ लिए और 6 7 और पढ़ना है ना। यूटिलाइजेशन रेट क्या होता है? सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ स्टेटस, द एक्सटेंट टू यूज द हेल्थ सर्विसेज इज ऑफन investigated. Utilization of service or the actual coverage is expressed as the proportion of people in need of a service who actually receives it in a given period, usually a year. It is argued that utilization rate give some indication of the care needed by the population and therefore the health status of a population. In other words, a relationship exists between utilization of healthcare services and health need and status. So, healthcare utilization is also affected by the factors such as availability कितना है, accessibility कितना है of the health services, and the attitude of an individual towards his health and the healthcare system. Now, a few examples of utilization rate are cited below. Population of infant who are fully immunized against the 9 EPI disease. ठीक है। फिर क्या है? Population of pregnant women who have received antenatal care and have their delivery supervised by trained birth attendant. Hello, mummy. Then percentage of population using the various methods of family planning. फैमिली प्लानिंग जो यूज़ कर रहे हैं। देन बेड ऑक्यूपेंसी रेट कितना है? एवरेज डेली इन पेशेंट सेंसेस बाय एवरेज नंबर ऑफ बेड्स। नाउ एवरेज लेंथ ऑफ स्टे क्या है? डे ऑफ केयर rendered and discharge. Then bed turnover ratio क्या है? Discharge by average bed rate. The above list is neither exhaustive nor all inclusive. So the list can be expanded depending upon the services provided. These indicators direct attention always form the biological aspect of the disease in population towards the discharge of social responsibility for the organization and delivery of healthcare services. Now, indicators of social and mental health. Social और mental health का क्या indicator है? So, as long as a valid positive indicator of social and mental health are scarce, it is necessary to use indirect measures. VIZ indicator of social and mental pathology. These include suicide, homicide, and act of violence and other crime, RTA, juvenile delinquency, alcohol, drug abuse, smoking, consumption of tranquilizer, obesity, ये सब होता है।
So to these may be added family violence, battered baby, now battered wife syndrome, neglect and abandonment of youth in the neighborhood. These social indicators provide a guide to school action for improving the health of the population. Now, environmental indicators क्या होते हैं? So, the environmental indicators reflect the quality of physical and biological environment in which disease occur and in which the people live. कि फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है जिसमें डिजीज़ होता है और जिसमें लोग रहते हैं. This includes indicators relating to pollution of the air and water, radiation, solar waste, noise, exposure to toxic substances in food and drink. Among these, the most useful indicator are those measuring the proportion of population having access to safe drinking water and sanitation facilities, and for example, percentage of household with safe water in the home or within 15 minutes walking distance from a water standpoint, or protected well, adequate sanitary facility in the home or immediate vicinity. Now, socioeconomic indicators क्या होता है? These indicators do not directly measure health. Nevertheless, they are of great importance in the interpretation of the indicators of healthcare. These includes rate of population increase, per capita GNP, level of unemployment, dependency ratio, literacy rate, and especially female literacy rate, family size, housing, the number of person per room, and per capita calorie available. ये बताता है किसी का भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है. क्या क्या? रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, पर कैपिटा जीएनपी, level of unemployment, dependency ratio, literacy rate, family size, then housing, then per capita calorie availability. ठीक है. Now policy indicators. So the single most important indicator of political commitment is the allocation of adequate resources. The relevant indicators are proportion of GNP spent on health services, proportion of GNP spent on health related activities including water supply, sanitation, housing, nutrition, community development, and proportion of total health resources devoted to primary health care. Now, indicators of quality of life. ये क्या है? Increasingly, mortality and morbidity data have been questioned as to whether they fully reflect the health status of a population. The previous emphasis on using increased life expectancy as an indicator of health is no longer considered adequate, especially in developed countries, and attention has shifted more towards the concern about the quality of life enjoyed by individual and communities. So, quality of life is difficult to define and even more difficult to measure. So, various attempts have been made to reach one composite index for a number of health indicators. The physical indicator of life index is one such index. So, to consolidate three indicators, I said infant mortality, life expectancy at age 1, and literacy. Obviously, more work is needed to develop indicators of quality of life. Now, social indicators क्या होता है? Social indicators as defined by UN Statistical Office have been divided into 12 categories. क्या क्या social है? So, population, family formation, family and household, learning, educational services, earning activities, distribution of income, consumption and accumulation, social security and welfare services,
health services and nutrition, housing and its environment, public order and safety, time use, leisure, culture, social satisfaction, and more mobility. Now, basic need indicators क्या है? Basic need indicators are used by ILO. Those mentioned as basic need performance include calorie consumption, access to water, life expectancy, death due to disease, literacy, doctor nurse per population, room per person, GNP per capita. ना इसके बाद हमें पढ़ना है स्पेशल इंडिकेटर सीरीज़। ये तो हमारा था कि हेल्थ इंडिकेटर, अब स्पेशल इंडिकेटर पढ़ना है। स्पेशल इंडिकेटर में आप चार देख सकते हो क्या क्या है। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिलेटेड टू हेल्थ, इंडिकेटर्स फॉर प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर। सो ये एक बार देख लेंगे हम लोग। देन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग रीजन है। हेल्थ सर्विस की फ़िलासफ़ीज़ उसके बाद पढ़ेंगे। देन यही नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड ऑल दैट पढ़ेंगे। कुछ देर रेस्ट के बाद हम लोग दूसरा सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।